एहसास न्याय का सबके लिए, आकाश न्याय का सबके लिए, उल्लास न्याय का सबके लिए, विश्वास न्याय का। I, Srimati Vijaya Amre, Member Secretary, Goa State Legal Services Authority, warmly welcomes you all the viewers of Virtual Juridicare Series Season 3. Today we have with us Shri Arunedra Kumar Pandey, who will enlighten us on the topic Transgender Persons Rights Act 2019. Arunedra Kumar Pandey is also known as Arun Kumar Pandey. He has completed his Masters in Social Work, Criminology and Correctional Administration from Tata Institute of Social Sciences, Mumbai. He is also a Bachelor in Law. When we talk about Shri Pandey, we always remember ARZ, an NGO, Anyay Rahit Jindagi. Yes friends, Shri Pandey is none other than the founder, member and director of ARZ since 1997. Shri Pandey will be speaking today on the topic Transgender and their entitlement. I request Shri Pandey to take over the session. Namaskar. Today I am going to speak on situation of transgender in India and entitlements provided under the Transgender Persons Rights Act 2019. India is a country that celebrates diversity in culture, creed, religions so vibrantly that the world talks about unity in diversity concept. But the ugliest side of society is not accepting all the transgenders equally. Even though legally every gender is treated in a respectful manner, but when it comes to transgender, there is still a taboo in our society. There exists a lot of misinformation and misconceptions about transgender. Before we dwell further, let's understand who is a transgender. Transgender persons means a person whose gender does not matches with the gender that was assigned to them at their birth, but they are the persons with intersex variation and gender queer. They are the people who are born with male or female, but they feel different from their body structure as their gender expression, identity, or behavior differs from their birth sex. Unfortunately, we are in a society where gender plays a major role in judging people. Although third gender name is given to the transgender, they don't get to live with peace and harmony. They all face severe discrimination, sexual harassment in every part of their country on a daily basis. These communities are not something that came into existence in the recent centuries. If we look back in history, they have a record of almost 4,000 years. Since mythological times, there is mention of Napunsaka in our Vedic literature. Jain literature gives them a name of psychological sex. So how did this concept of inequality arise in our country? It was under British rule that they passed an act called the Criminals Tribe Act in 1871, according to which the transgenders were treated as criminals, and after which the whole situation in the nation changed. Even though the law was repealed in 1949, but the discrimination continued for the transgender communities. Transgender face major challenges in India. Unfortunately, since birth, they start feeling discriminated. They starts from home. When family comes to know that they are different or they are behave different,
or their gender is different, they are thrown out of their own homes and not accepted by their own families. Or many of them, because of discrimination, escape from their houses, because of which they don't have a shelter or a place they can call home. Discrimination doesn't, since they leave home, many of them are found to be not properly educated. And as a result, what we find is that majority of these people from this community are illiterate or have less education, because of which they are not able to get involved much in the education section of the society. Since they are not given education opportunities, this further results in not finding employment. And even for those who pursue their education with full of struggles, they're not given the same respect and value in the workplace. The other area where they feel discriminated is the social exclusion and homelessness. Since the transgender community lack education and employment opportunities, they are looked upon as a lower class by society, resulting in social exclusion. Their self-esteem and self-confidence hit really hard because of this exclusion, and they end up taking undesirable jobs. Many of the transgenders are found to be either begging or in sex work. The other area which is concerned is that dealing with transphobia and psychological stress. Compared to the people who identify themselves as heterosexuals, the transgender community face a lot of harassment, discrimination, and intolerance from the society. Due to the moral, religious, and societal belief, few individuals turn out to be transphobic, which results in attacks, negativity, workplace harassment. They go through loneliness, anxiety, and insecurity because of society. The transgenders community is not legally protected as much as any other community, and because of this, they are easily victimized for the crimes they didn't even commit. They undergo a lot of violence and become victims of hate crimes, sexual abuse, commercial sexual exploitation. Police is found to be insensitive when it comes to these communities and do not even register the complaints when they go to the police station to report about the abuse and exploitation. The other area which they face problem is that finding place on rental basis. People are not ready to give them house on rent. As a result, many of the transgenders are found to be finding shelter on the street or at the railway station, which has been one of the major cause of their abuse and exploitation. Also, those who are fortunate or those who manage to get a house on rent, they have to pay a high rent compared to other genders. They also face a lot of discrimination when they are traveling. People hesitate to share seat and berth with them. The Indian Constitution provides under Article 14, 15 and 16 equality, and under Article 21 provides right to freedom for each and every Indian citizens. But transgenders person are deprived from their basic right of freedom and equality. In the landmark judgment of National Legal Service Authority versus Union of India, the third gender gained legal recognition in the eyes of law as the Honorable Supreme Court ruled that the fundamental rights should be available to the third gender in the same way as they were provided to the male and females. In 2019, government enacted the Transgender Person Protection of Rights Act, which provides prohibition against discrimination in the matters of employment, education, and health.
Services to the transgender person and welfare measures have been adopted to protect them rights of transgender person. Some of the salient features of this act include definition of transgender person. The act defines a transgender person as one whose gender does not match the gender assigned at birth. It includes trans men and trans women, persons with intersex variation, gender queers, and persons with socio-cultural identity such as Kinnar and Hijra. Intersex variation is defined to mean a person who at birth shows variation in his or her primary sexual characteristics, external genitalia, chromosomes, or hormones from the normative standard of male or female body. The Act provides for prohibition against discrimination. The Act prohibits the discrimination against a transgender person, including denial of service or unfair treatment in relation to education, employment, healthcare, access to or employment or enjoyment of goods, facilities, opportunity available to the public, right to the movement, right to reside, rent or otherwise occupy property, opportunity to hold public or private office, access to a government or private establishment in whose care or custody a transgender person is. It also provides right to residence. Under this, every transgender person shall have a right to reside and be included in his household. If the immediate family is unable to take care for the transgender person, the person may be placed in a rehabilitation center on the orders of competent court. The Act also discusses about employment. It provides that no government or private entity can discriminate against a transgender person in employment matters, including recruitment and promotion. Every establishment is required to designate a person to be a complaint officer to do with the complaints in relation to the Act. It also discusses about education. Educational institutions funded or recognized by the relevant government shall provide inclusive education, sports, and recreation facilities for transgender persons without discrimination. On the front of healthcare, the government must take steps to provide health facilities to transgender persons, including separate HIV surveillance centers. The government shall review medical curriculum to address health issues of transgender persons and provide comprehensive medical insurance scheme for them. The Act also provides for a certificate of identity for a transgender person. According to the Act, a transgender person may make an application to the district magistrate for a certificate of identity indicating the gender as transgender. A revised certificate may be obtained only if the individual undergoes surgery to change their gender either as a male or female. The Act provides for welfare measure by the government. The Act states that the relevant government will take measures to ensure the full inclusion and participation of transgender person in society. It must also take steps for the rescue and rehabilitation, vocational training, self-employment, and create schemes that are transgender sensitive and promote their participation in cultural activity. The Act provides for penalties for any kind of violation of the provision of the Act. The Act has provided for a council to advise the central government as well as monitor the impact of policies, legislation, and projects with respect to transgender person. It is also expected to redress the grievances of transgender person. I would like to conclude by saying that legislation of Act is a good beginning, but till and until it is implemented in the right spirit,
the transgender will continue to be discriminated and face violence. It is therefore the duty of the state and the society to jointly work towards to ensure that the third gender in India get the same benefits as male and female citizens of India. Thank you. Thank you, Mr. Arun Kumar Pandey, for enlightening us on this topic and giving us valuable information. Now, second speaker for today's series is Mr. Shorya Bisaria, who is Assistant Director, Social Protection Mainstreaming, Goa State AIDS Control Society. In short, GSACS. Without taking much time, I request Mr. Shorya to kindly take over the session and enlighten us on the topic laws that protects rights of HIV/AIDS persons in India. आप सभी को मेरा नमस्ते। आज हम एक एक्ट के बारे में जानेंगे जिसे हम कहते हैं HIV/AIDS प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 2017। ये एक्ट भारत में 2017 में आया था और पूरे भारत में ये लागू किया गया था। जानते हैं ऐसा क्या है इस एक्ट में जो कि बहुत ज़रूरी है हमें जानना। एड्स वाले लोगों से कई तरह के भेदभाव होते हैं, उन्हें कई तरह का दिक्कत झेलनी पड़ती है, जिसी वजह से इस कानून को लाया गया। द एम ऑफ दिस एक्ट इज टू अवॉइड स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन। सो दे फेस अ लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन because of which this act came into force, and this protects their right from being stigmatized or one in any way. Then it also says that the companies should create a enabling environment for people living with HIV so that they can live with dignity and earn their livelihood. HIV/AIDS एक्ट और क्या कहता है? ये एक्ट कहता है कि हर पर्सन लिविंग विद HIV जो है इसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार से फ्री ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो इसके लिए गोवा में जीएमसी में हॉस्पिसियो में फ्री ट्रीटमेंट सर्विस है जिसे हम कहते हैं ART ट्रीटमेंट, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ट्रीटमेंट। नेक्स्ट ये एक्ट क्या कहता है? ये एक्ट कहता है कि ग्रीवियंस जल्दी से जल्दी एड्रेस की जाए। अभी ग्रीवियंस का मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कोई हॉस्पिटल सेटिंग है, एक गर्भवती महिला एक बच्चे को जन्म देने वाली है और वो महिला HIV पॉजिटिव है। डॉक्टर ने उसको इनकार कर दिया उसकी डिलीवरी करने से। तो क्या होता है कि ये एक्ट कहता है कि 24 घंटे के अंदर इसकी हियरिंग होनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू मेडिकल ट्रीटमेंट। एंड अगर किसी कंपनी से किसी को निकाला जाता है या किसी कंपनी में जॉब के लिए किसी से HIV टेस्ट मांगा जाता है या कॉलेज एडमिशन के लिए HIV टेस्ट मांगा जाता है, तो ये एक्ट उनके राइट सेफगार्ड करता है कि कानूनन इसे नहीं मांग सकते। ये एक्ट प्रॉपर्टी के राइट्स भी सेफगार्ड करता है। अगर कोई बच्चा है, उसके माँ बाप को HIV/AIDS था और उनकी डेथ हो गई, तो उस बच्चे को उनके प्रॉपर्टी राइट से कोई निकाल नहीं सकता। तो ये राइट प्रोटेक्ट करता है। और कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि एक बच्चा 10 साल का है तो एक बच्चा 12 साल का है, तो ये क्या कहता है एक्ट, 12 से 18 साल का जो बच्चा है वो भी छोटे भाई बहन का अपने गार्डियन बन सकता है। सो ये एक्ट बहुत सारी सुविधाएं देता है। ये एक्ट और एक चीज कहता है कि आपको कहीं पे प्रॉपर्टी परचेस करने, भाड़े पर लेने या ऑफिस के लिए कोई रोक नहीं सकता। आप जहां हो, आपको जहां मन हो आप वहां प्रॉपर्टी ले सकते हो, घर खरीद सकते हो, कोई आपको डिनाई नहीं कर सकता। अब हम चलते हैं प्रिजन की तरफ। अगर कोई HIV/AIDS का पर्सन है, वो जेल में है और वो 10 साल 20 साल अपनी सजा काट रहा है, बट अगर उसको ट्रीटमेंट लेना है तो इसमें क्या प्रावधान है? ये एक्ट ये कहता है कि HIV/AIDS अगर किसी प्रिजनर को है तो उसको जरूरी ट्रीटमेंट लेने के लिए हर हफ्ते अस्पताल ले जाया जाए ताकि वो अपना ट्रीटमेंट ले और एक लंबी आयु वाली अच्छी जिंदगी जिए। अगर कोई पर्सन लिविंग विद HIV है, वो कहीं ना कहीं अपनी रोजी रोटी के लिए काम करेगा, या तो वो किसी प्राइवेट दफ्तर में काम करेगा या किसी कंपनी में काम करेगा, तो कंपनी में उनसे भेदभाव ना हो और कंपनी में HIV/AIDS की बहुत ज्यादा जागरूकता हो, तो इसके लिए भी एक प्रावधान है। हर वो कंपनी जिसमें 100 से ज्यादा कर्मचारी हैं, उस कंपनी में एक कंप्लेंट्स ऑफिसर नियुक्त होना चाहिए।
ये कंप्लेंट्स ऑफिसर या तो एचआर मैनेजर हो सकता है या फिर कोई और, या किसी भी एग्जिस्टिंग स्टाफ को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो इस ऑफिसर की क्या जिम्मेदारी रहती है कि उनकी संस्था में एक तो जागरूकता हो HIV एड्स की और कोई भेदभाव ना हो। जैसे कि उनको जब जॉब पे लिया जाए तो उनका ब्लड टेस्ट करना कराया जाए HIV एड्स के लिए, उनसे कोई और फॉर्म में ना पूछा जाए कि आप HIV एड्स हो या नहीं। HIV एड्स प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट 2017, इसमें एक प्रावधान है कि हर राज्य में ओम्बुड्समैन का होना जरूरी है। अभी ओम्बुड्समैन कौन होता है? आप सोचिए, अगर एक कंपनी है, चॉकलेट बनाने की कंपनी, उसमें 300 से ज्यादा कर्मचारी हैं। उस कंपनी में एक कोई है जिसको HIV एड्स हुआ है, उसने अपने मित्र को बताया और उसने कंपनी में सबको बता दिया। अभी कंपनी उसे निकाल रही है। अगर उस कंपनी में कंप्लेंट्स ऑफिसर नियुक्त है तो वो उसे कोशिश करेगी कि इस बारे में ज़्यादा जागरूकता है तो उसे ना निकाले। पर अगर उन्होंने उसे निकाल दिया तो वो कर्मचारी कहाँ जाएगा? उसे न्याय कहाँ मिलेगा? उसे न्याय मिलेगा ओम्बुड्समैन के पास, जो कि हर राज्य में होता है। कुछ राज्य जो कि बहुत बड़े हैं, इसमें कई सारे ओम्बुड्समैन होते हैं, बट कुछ राज्य जैसे गोवा राज्य, यहाँ भी एक ओम्बुड्समैन है। तो जहाँ पे कर्मचारी न्याय मांगने जा सकता है, वो ओम्बुड्समैन इस केस को देखेगा, कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया जाएगा, कर्मचारी को बुलाया जाएगा और इस मैटर को यहीं समाप्त किया जाएगा। अगर ये मैटर ओम्बुड्समैन लेवल पर ठीक हो जाता है तो सही, बिल्कुल सही है। नहीं तो ओम्बुड्समैन इसे कोर्ट तक ले जा सकता है और कोर्ट करेक्शनल मेजर्स देखकर जिस कंपनी ने उस कर्मचारी के साथ इनजस्टिस किया है उनको कुछ नॉमिनल अमाउंट की फाइनेंशियल सजा दे सकता है, या फिर उस HR मैनेजर को NGO में काम करने के लिए कुछ महीनों के लिए कह सकता है। तो HIV एड्स जो एक्ट है ये ज़्यादा हैवी पनिशमेंट के लिए नहीं है, ये बस इसके लिए है ताकि करेक्शनल मेजर्स हो, आदमी को जो गलती कर रहा है उसे अपनी गलती का एहसास हो। अगर कोई इंसान है जिसको लगता है कि उसे HIV हो सकता है, वो जाता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर और जाके अपना टेस्ट कराता है। तो ये एक्ट क्या कहता है कि उसका रिजल्ट 24 घंटे में दिया जाए कि उसको HIV पॉजिटिव है या नहीं, और यह रिजल्ट बस उसी को बताया जाए, ना ही उसके माँ बाप, ना ही उसके भाई बहन, ना ही कोई और रिश्तेदार। रिजल्ट जिसने टेस्ट किया है बस उसी को दिया जाता है। आखिर में इन्फॉर्म्ड कंसेंट, ये एक्ट कहता है पर्सन लिविंग विद HIV के राइट सेफगार्ड करने उसका इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना जरूरी है। जैसे अगर HIV एड्स का एक पेशेंट है, उस पर कोई रिसर्च कर रहा है, तो उसकी इन्फॉर्म्ड कंसेंट मतलब उसकी रिटर्न परमिशन लेना, ये इस एक्ट के अंडर बहुत ज़रूरी है। एट द एंड आई जस्ट वांट टू से HIV एड्स प्रिवेंशन एक्ट कंट्रोल एक्ट 2017, इसको एक बार ज़रूर पढ़ें क्योंकि ये बहुत सारी नई चीज़ें बताता है जो हमने पहले कभी नहीं सुनी। और ये हर PL-HIV जिसका हम पर्सन लिविंग विद HIV हो या एड्स, इनके राइट्स, फंडामेंटल राइट्स सेफगार्ड करता है और उनकी सुरक्षा करता है। जय हिंद। On behalf of Goa State Legal Services Authority, it is my immense pleasure to express my sincere thanks to our today's speaker, Mr. Arun Pandey and Shorya Bisaria, who enlightened us and also sensitized us on the topic of Transgender Persons Rights Act 2019 and also laws that protects rights of HIV to AIDS persons in India. I request all our viewers to like, share and subscribe to this channel. Thank you. राष्ट्रीय न्यायिक सेवा प्राधिकरण न्यायालयातल्या कारवाई खातीर बरो वकील मेळोवन दिता, वेळार योग्य कायद्या खालची मदत आणि सल्लो दिता, लोक अदालत द्वारा चड काळच्या केसीक बेगीन सोपयता आणि ते बी सामके मोफत. राष्ट्रीय न्यायिक सेवा प्राधिकरण, बेस बरो न्याय, बेस बरो समाज. अधिक माहिती खातीर लागच्या न्यायालयातल्या न्यायिक सेवा प्राधिकरण कार्यालया लागी संपर्क करा वा टोल फ्री नंबर 151000 चेर फोन करा.